Good morning, dear children. How are you? I hope you all are fit and fine. So, let us start our new chapter, chapter number 2, My School. So, today, what we are going to study? We are going to study about My School. आज हम My School के बारे में पढ़ेंगे. आज मैम आपको वीडियो के थ्रू स्कूल घुमाएंगी. So, are you all ready? Yes. So, let's go. But before starting the new lesson, let us revise our first lesson. Lesson number 1, our neighborhood. So, dear children, can you tell me what we have learned in our previous lesson? Our neighborhood. Yes, we have learned about neighbors and neighborhood and different places in our neighborhood. So, now can we start? Okay. But before starting, one thing you have to do today. Take one pencil and notebook. Now you must be thinking, मैम क्या करा रही हैं? आप एक पेंसिल लें और एक कॉपी लें. Then I will give you some activities. Okay, so ready? आपको कॉपी में रूम्स के बारे में लिखना है. आपके स्कूल में आपने कौन कौन से रूम देखे हैं? क्या आप उनको लिख सकते हैं कॉपी में? So, let's start. Okay, write the names. Then I will show you the list. Okay. So, can I show you the list? Okay. आप नेम लिखेंगे और मैम की लिस्ट से मैच करेंगे. So, let's start. Now, here is the list of school rooms and places. So, let us match, read. Now, बैक टू स्कूल. हम वीडियो के थ्रू स्कूल को देखेंगे. तो आपने आपकी कॉपी में क्या क्या लिखा है यहाँ पर आप मैच करेंगे. सो फर्स्ट इज क्लासरूम. आपने स्कूल में क्लासरूम देखी है? यस, उसी में तो पढ़ाई करते हैं. देन म्यूज़िक रूम. यस. देन मेडिकल और सिक रूम. जब आप बीमार होते हैं तो आप सिक रूम में जाते हैं. आपने देखा है? यस. लाइब्रेरी आपने देखी है? ओके, अगर नहीं देखी है तो जब आप स्कूल आएंगे तो मैम आपको ज़रूर दिखाएंगी और आप मैम से ज़रूर पूछना. ओके. देन प्लेग्राउंड, फेवरेट प्लेस. देन वॉशरूम. यस, वॉशरूम आपने लिखा था? ओके, वॉशरूम. देन स्टेज जहाँ पर आप डांस करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्कूल के और आप परफॉर्मेंस करते हैं. एंड एक्टिविटी रूम, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. सो इन रूम्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. एक और एक्टिविटी हम करेंगे. नाउ यू हैव टू राइट क्लासरूम ऑब्जेक्ट. आपने आपकी क्लासरूम में किन किन चीज़ों को देखा है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. यस, स्टार्ट राइटिंग. आई एम वेटिंग फॉर यू. स्टार्ट राइटिंग. 5 things you write, only 5 things. Then we will match. किसका आंसर सही है? Okay. Yes. So, let's go to the next slide and see list of classroom objects. Now, here you will match. और कोई चीज़ आप भूल गए हैं तो आप इसे मैच कर सकते हैं. So, let us read here. क्लासरूम में क्या क्या होता है? क्लासरूम में डेस्क होते हैं, टेबल होते हैं, चेयर होते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, ब्लैक बोर्ड, कबर्ड जिसमें मैम आपकी नोटबुक्स और बुक्स रखती हैं. देन चॉक से मैम लिखती हैं. एंड स्मार्ट बोर्ड पर आप पोएम सुनते हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ भी देखते हैं और उस पर पढ़ाई भी करते हैं. तो क्या आपकी लिस्ट मैम की लिस्ट से मैच कर रही है? यस, बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही होंगी. तो अब जो आपने नेम्स लिखे थे रूम्स के और ऑब्जेक्ट्स के, अब आप उनको लर्न भी करना. ओके. मैम नेक्स्ट वीडियो में नई एक्टिविटी आपके लिए लेकर आएंगी. होप यू एंजॉयड दिस. सो लेट्स स्टडी अबाउट स्कूल. स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न टू रीड, राइट, ड्रॉ एंड स्टडी न्यू थिंग्स. हम स्कूल में पढ़ना, लिखना, ड्राइंग करना और भी बहुत सारी नई चीज़ें हम सीखते हैं. नंबर 2, वी मेक फ्रेंड्स इन स्कूल. हम स्कूल में फ्रेंड्स भी बनाते हैं. नंबर 3, वी लर्न टू शेयर
our things with others. हम क्लास में हमारे फ्रेंड्स के साथ चीज़ें भी शेयर करते हैं. समटाइम वी शेयर लंच, समटाइम वी शेयर बुक. और हमें वैसे भी शेयर करना चाहिए. जब आपके फ्रेंड्स को किसी भी चीज़ की नीड हो या हेल्प हो तो आपको आपकी चीज़ें शेयर करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए. नाउ लास्ट, वी ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स इन स्कूल. हम स्कूल में बहुत सारे गुड मैनर्स भी सीखते हैं. आप सीखते हैं? यस, और उनको फॉलो करते हैं. यस, आप बहुत सारे गुड मैनर्स घर में भी सीखते हैं और स्कूल में भी सीखते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, नाउ वी विल लर्न अबाउट rooms in a school. So let's go to the next slide. Now open your book. Rooms in a school. Dear children, besides classroom, there are many other rooms in a school. Let's visit some of them. Now let us visit rooms in a school. अभी मैम ने आपको लिस्ट बताई थी. अभी हम कुछ रूम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. So first is principal's room. Do you know children who is the head of the school? Yes, our respected principal is the head of the school. And principal sits in the principal's room and manage all the school work. Library. Yes, library में हम books reading करने जाते हैं. आप जब स्कूल आएंगे हम आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे. वहाँ पर आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं और बहुत यूज़फुल बुक्स आप पढ़ सकते हैं. But there is one rule for library. कीप साइलेंस. लाइब्रेरी में आप खाना नहीं खा सकते हैं और टॉकिंग भी नहीं कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ऑफिस. ऑफिस में क्या होता है? ऑफिस में क्लर्क्स वो क्या करते हैं? ऑफिस में क्लर्क बैठते हैं और वो ऑफिशियल वर्क संभालते हैं. स्कूल का जो भी काम होता है वो संभालते हैं. नाउ टॉयलेट और वॉशरूम. आप टॉयलेट में हैंड वॉश भी करते हैं. और एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जब भी आप वॉशरूम का यूज़ करें तब आपको क्या करना है? फ्लश का यूज़ भी करना है. और क्या करना है? हैंड वॉश अच्छे से करना है. ओके. फ्लश यूज़ करना है और हैंड वॉश अच्छे से करना है. देन स्टाफ रूम. डू यू नो व्हाट इज स्टाफ रूम? स्टाफ रूम इज़ अ कॉमन रूम फॉर टीचर्स. स्टाफ रूम क्या होता है? कॉमन रूम होता है जहाँ पर टीचर्स बैठते हैं और उनका वर्क करते हैं. यस. देन मेडिकल रूम. जैसा मैंने आपको बताया था, मेडिकल रूम को हम सिक रूम भी कहते हैं. यहाँ पर क्या होता है? देखो आप पिक्चर में. यहाँ पर जब आपको कोई चोट लगती है या आप बीमार होते हैं तो आपको फर्स्ट एड दिया जाता है. फर्स्ट एड तो आपको पता ही है. क्या होता है फर्स्ट एड में? आपको मेडिसिन दी जाती हैं. अगर कोई चोट लगी है तो आपको क्रीम लगाया जाता है, ऑइंटमेंट्स लगाए जाते हैं, एंटीबायोटिक क्रीम्स लगाए जाते हैं. ओके. तो मेडिकल रूम में आपको ट्रीटमेंट मिलता है. देन कंप्यूटर रूम. कंप्यूटर रूम में आप देखो बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं. कंप्यूटर रूम को कंप्यूटर लैब भी बोलते हैं. कंप्यूटर रूम में हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं. ओके. म्यूज़िक रूम. देखो पिक्चर में बच्चे बैठे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं. सो इसी तरीके से आप भी म्यूज़िक रूम में म्यूज़िक और डांस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखते हैं. देन ऑडिटोरियम. Auditorium. What is auditorium? Can you see in the picture? Some children are dancing. Auditorium एक लार्ज रूम होता है जहाँ पर ऑडियंस कौन होते हैं? ऑडियंस वो होते हैं जो परफॉर्मेंसेस को देखते हैं. लाइक योर पेरेंट्स, स्कूल मेंबर्स एंड सम अदर पीपल. सो को रूम्स के बारे में पता चला. अगर कोई रूम मिस हुआ तो आप जब स्कूल आएंगे तो मैम आपको वो रूम्स दिखाएंगी. So dear children, let's go to the next slide. Computer room. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कंप्यूटर रूम क्या होता है? A computer room is the room where we learn about computer. Computer is a useful machine. It is used for doing so many works. It makes our works easier. कंप्यूटर रूम में हम कंप्यूटर सीखते हैं. देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है? बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और कंप्यूटर चला रहे हैं. आपको पता है कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल मशीन. वो बहुत यूज़फुल मशीन है. उससे हम हमारे बहुत सारे वर्क्स इजी कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, या वन मोर थिंग, कंप्यूटर रूम. जब आप आएंगे तब हम आपको कंप्यूटर रूम दिखाएंगे और कंप्यूटर चलाना भी सिखाएंगे. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लाइब्रेरी. There are many story books and reference books
kept in library. We should not eat or make noise in the library. Dear children, always remember that we should not eat or make noise in the library. Yes, this is the main rule of the library. Keep silence. And what we do in a library? We read books. See the picture of library? Yes, here. You can go and read book there. Okay? Let's go to the next. Now, classroom. Yes, dear children. Now we will discuss about classroom. Who all are there in the classroom? Teacher, then children, blackboard, chairs, tables, smartboard and blackboard. Number 1, we study in a classroom. हम कहाँ पढ़ाई करते हैं? Classroom में. A classroom has desk, benches and blackboard. We should keep our classroom clean. Yes, dear children, always remember that we should keep our classroom clean. But how? I will tell you. आप classroom clean कैसे रख सकते हैं? By throwing all the litters, bits of papers, waste material in the dustbin. By throwing all kind of waste material in the dustbin. Now I will show you 2 pictures. Just look at this picture number 1 and picture number 2. Now in picture number 1, can you see children are sitting and throwing things here and there. This class is looking untidy. Is it looking untidy? Yes. Do you like this type of class? Untidy? No. Now let's go to the second picture. Just look at there. Children are sitting in the line. Tables and benches all are arranged. Oh dear children, which class you like? Untidy or well arranged class? Yes, well arranged class. So, same way you have to keep your classroom clean. Okay? तो आपको classroom clean रखने के लिए क्या करना चाहिए? Books, आपकी things आपको proper place पे रखनी चाहिए और कुछ भी कचरा और वेस्ट मटेरियल जो भी होता है आपको डस्टबिन में डालना चाहिए. हमेशा क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ नेक्स्ट इज ऑडिटोरियम. यू नो अबाउट ऑडिटोरियम? ऑडिटोरियम इज अ लार्ज रूम वेयर ऑडियंस सिट टू वॉच द परफॉर्मेंस. ऑडिटोरियम एक तरीके का लार्ज रूम होता है जहाँ पर आप परफॉर्मेंस करते हैं, जहाँ पर एनुअल फंक्शन होते हैं और भी जो भी प्रोग्राम्स या फंक्शन होते हैं वो ऑडिटोरियम में होते हैं. वहाँ पर हमारे पेरेंट्स, स्कूल मेंबर्स बैठ के हमारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट पीपल हु वर्क इन अ स्कूल. डियर चिल्ड्रन, डू यू नो अपार्ट फ्रॉम टीचर्स एंड प्रिंसिपल देयर आर अदर पीपल हु वर्क इन अ स्कूल. डू यू नो दैम? यस, bus driver and gardener. They also help us in many ways. Okay, and aunties are also there. They also help us. So, we should respect them and love them. Why? Because they are helping us. So, we should always respect them. Do you know what they do? Yes, peon do so many works. है ना? Like ringing the bell, giving the notice and bus driver. आपको घर छोड़ने जाते हैं? Yes. And then gardener, they look after the garden and plants. So, now whenever you take help from them, you should say thank you and you should always love them and give respect them. Now children, जब भी आप उनकी help लें, आप उनको thanks बोलें. Okay, let's go to the next slide. Write 5 lines about my school. Dear children, here you have to write 5 lines about my school. Number 1. My school name is St. Joseph's Convent School. Number 2, it is one of the best schools in my city. ये मेरे city का सबसे best school है. My school building is very big. It has a big garden and a playground. My school has a big library. So dear children, you have to learn all these 5 lines about my school. I will ask you. Now let's go to the next slide. Now exercise time. Question number 1. Think and name the room in which you do these activities.
Here you have to write the names of the rooms. Number 1. Read books. Where do you read books? In library. Number 2. Learn computer. Computer room. Study. Where do you study? Classroom. Learn music. Music room. Attend school functions. Auditorium. Let's go to the next question. Question number B. Find the names of the things you use in school in the word search. Use pictures as clue. Dear children, some pictures are given in your book. You have to write the correct name. Number 1. What is this? Sharpener. You have to learn all the spellings. So repeat after me. Yes, let's start. SHARPENER. Sharpener. First is sharpener. Second, what is this? Pencil. 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 Number 3, eraser. 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 Then next, crayons. 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 Next, books. 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 Now this one, paint. 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 Then bag. 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 Now last one, what is this? Brush. 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 Let's go to the next question. Now next question. Question number C. Circle the things you learn at school. Now what you learn at school? Yes, we have to circle here. Number 1 is read. Do you read at school? Yes. So you'll circle here read. Number 2, write. Yes, write. Then cry. No. Play games. Yes, we play games in the playground. Now next is draw and paint. Yes. Bathe. Do you bathe at school? No. Sing and dance? Yes, we learn to sing and dance at school. Now last one is computer. We learn computer at school. Okay, let's go to the next slide. Now answer the following question. Number 1. What are the 3 things you do in your classroom? Answer is, the 3 things we do in our classroom are reading, writing and drawing. आप क्लासरूम में 3 things क्या करते हैं? क्या सीखते हैं आप? You learn reading, writing and drawing. Number 2. Name the room in which we attend school functions. Where do we attend school functions? Yes, where? Auditorium. Then number 3. Name the room in which we learn music. Where do you learn music in school? Which room? Music room. Number 4. Name the room in which we study. We study in a classroom. So, where do we study? In classroom. Let's go to the next question. Now, points to remember. Dear children, here we have some points to remember. ये points आपको हमेशा याद रखने हैं और follow करने हैं. We should always throw waste things in the dustbin. हमको waste things कहाँ फेंकनी चाहिए? Dustbin में. Dear children, always remember when you throw anything like bits of paper, any toffee wrappers or any waste material, वो आपको कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में. कोई भी पेपर या कोई भी वेस्ट मटेरियल आपको हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए. नंबर 2, we should always clean the table after lunch. खाना खाने के बाद हमको हमारा टेबल साफ करना चाहिए. नंबर 3, while drinking we should not splash water on the floor. जब आप पानी पीते हैं आपको पानी नहीं गिराना चाहिए और बॉटल को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. We should keep our books in proper place. हमको हमारी बुक्स प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए. जब बुक्स का यूज़ नहीं हो तब उसको बैग में रखना चाहिए. फर्स्ट नंबर, we must love and respect our principal, teachers, our classmates and other school staff. को हमेशा हमारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स, क्लासमेट्स और अदर स्कूल स्टाफ जो भी हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको लव करना चाहिए. और हमें हमारे क्लासमेट से कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो
तो आपको उनसे हेल्प लेना चाहिए और हेल्प करना भी चाहिए. और वी शुड ऑलवेज से थैंक यू. आपको हमेशा उनको थैंक्स भी करना चाहिए. So dear children, you have to follow all these points. Okay, will you follow? Yes, you will follow. I know. Let's go to the next. Now here we have finished our lesson. So dear children, what we have learned today? Today we have learned about my school and different types of room. And we have also learned the people who help us in a school. And what we have learned? We have learned that we should always respect them and love them. Now it's homework time. So let us see what is the homework. Number 1. Write and learn 5 lines about my school. Dear children, you have to write all the 5 lines about my school and learn also. Number 2 is learn and write these difficult words. See, some of the words are given here. You have to write in your notebook and learn them. First one is auditorium. Number 2, library. And number 3, computer room. Then 4th, medical room. And the last, classroom. So dear children, learn all these difficult words and write in your copy. Okay, so you have to do the homework. Yes. Now dear children, stay safe, stay home and thank you.